Good morning to all my dear students. Today here we are starting with a new topic. The name of this topic is petty cash book. After studying and solving number of problems regarding single column cash book, double column cash book, now in your syllabus there is one petty cash book. Okay, दिखने में तो ये petty the meaning of this petty means nothing but small. Okay, दिखने में तो ये small है, but you have to draw a proforma, this type of format for preparation of petty cash book, and this is large enough actually. Okay, but what is small, what is this petty cash book is all about? Okay, see, whenever in businessman always makes the payment of any cash or payment of any of the expenses in the form of cash or by check. Okay, so there are certain expenses to which he cannot pay check. Why? Because those expenses are very small in nature and he just hand over a certain amount of cash to the cashier, और फिर कैशियर क्या करता है, धीरे धीरे करके वो अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट को क्या करता रहता है, स्पेंड करता रहता है ऑन द नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो सिंपली पेटी कैश बुक मीन्स व्हाट? फ्रॉम द मैनेजर or from the businessman, he will transfer certain amount of cash to the cashier. कैशियर के पास चला जाएगा एंड कैशियर क्या करेगा, धीरे धीरे करके ऑन द स्मॉल एक्सपेंसेस, ऑन स्मॉल स्पेंडिंग्स ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल पोस्टेज हो गया, ओके, देन टेलीफोन एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा. सो ये सारी चीज़ों के ऊपर वो छोटा छोटा खर्चा करता रहता है. एंड एट द सेम टाइम इसके लिए व्हाट ही विल डू इज़ ही विल स्टार्ट टू कलेक्ट डिफरेंट वाउचर्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वाउचर्स ओनली ही विल रिकॉर्ड ऑल द एंट्रीज इनटू पेटी कैश. ओके, सो इसीलिए क्या करना पड़ेगा पेटी कैश में, वेन एवर यू विल ट्रांसफर और यू विल रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ पोस्टेज, एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन द वाउचर नंबर ऑफ दैट पोस्टेज. ओके, एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू एनी पर्सन, ओके, सो उसके लिए क्या बनाया जाता है, नॉट वाउचर, उसके लिए बनाया जाता है लेजर. Okay, so in that ledger account, whenever the payment will be made on the name of any person, so at that time you will have to make one ledger account. Is that clear? Now example is payment of coolie charges, cartage, taxi fare, refreshment, etc. All those are some example of petty expenses which covered under petty cash book. This is the format. Now format में क्या लिखा है, रिसिप्ट. ये रिसिप्ट साइड में क्या किया जाएगा, वेन एवर मैनेजर विल मेक द पेमेंट और मैनेजर विल हैंड ओवर सम कैश टू द कैशियर, तो वो कैश कहाँ पर लिखा जाएगा, रिसिप्ट साइड में. से फॉर एग्जांपल दिस कैश इज़ 500 रुपीज़. सो दिस 500 रुपया किससे लिया है, कैशियर ने मैनेजर से या बिजनेसमैन से लिया है. एंड डेट के सामने डेट लिखेगा, वॉट एवर वुड बी द ट्रांजेक्शन्स, सो वो ट्रांजेक्शन्स के डेट यहाँ पर लिखे जाएंगे. एंड पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाएगा कि ये पैसा कहाँ कहाँ पर खर्चा हो रहा है, ऑल द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स. ओके, वाउचर नंबर के सामने वाउचर्स. ओके, नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम इग्नोर दिस टोटल. ओके, तो पोस्टेज के सामने पोस्टेज का खर्चा ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, टेलीफोन के सामने टेलीफोन का खर्चा, स्टेशनरी, कन्वेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. लेजर फोलियो भी एक बनाया जाएगा लास्ट में. वाई? बिकॉज वेन एवर यू विल मेक पेमेंट टू एनी पर्सन इन द नेम ऑफ दैट पर्सन, सो एट दैट टाइम यू विल हैव टू ड्रॉ दिस लेजर अकाउंट. ओके, इज दैट क्लियर? एंड लास्ट आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टेज में, टेलीफोन में, स्टेशनरी में जितना टोटल खर्चा हुआ है, सो बाय दैट डेट यू हैव टू मेक द टोटल ऑफ दिस इन द टोटल कॉलम. ओके, सिंपली अगर आपको ये ठीक से समझना हो, सो यू हैव टू मूव ऑन टूवर्ड्स सम. ओके, सो दिस इज आवर solution. Okay, this is our question and here we are going to solve the question. But before that, in the examination also, whenever you will start to solve that question, you have to make the preparation properly. Okay, and which type of preparation you have to do, let me tell you. See, from the following particulars,
प्रिपेयर पेटी कैश बुक रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर ₹200। चीफ कैशियर से हमने पैसा लिया है, सो ऑफकोर्स इट विल कवर्ड अंडर रिसिप्ट साइड। ओके, देन पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प। सो दिस पोस्टल स्टैम्प इज नथिंग बट पोस्टेज चार्जेस। ओके, सो ये पोस्टल स्टैम्प कहाँ पर कवर होगा? पोस्टेज में। ओके, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। देन पेड टेलीफोन चार्जेस। सो टेलीफोन चार्जेस कवर्ड अंडर टेलीफोन एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया टेलीफोन एक्सपेंस। ये मैं क्यों बना रही हूँ? बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड हाउ मेनी कॉलम्स आई हैव टू ड्रॉ आई डोंट नो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन, आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन एंड मेकिंग नंबर ऑफ अकाउंट्स। परचेस्ड पेंसिल, अभी पेंसिल अकाउंट बनाऊंगी। नो, पेंसिल कवर्ड अंडर stationery, so I will have to draw one stationery account also. Purchased revenue stamps, again this revenue stamps covered under postage. Okay, then paid for conveyance of manager, so this conveyance charges I will have to mention. Okay, paid to Narendra, now this is what, मैंने किसी पर्सन को पैसे भी दिए हैं, so this is what ledger account. Okay, paid for advertisement, so here this will covered under advertisement expense. And purchased files, अभी मैंने files कुछ खरीदी किया, so it will covered under my stationery. Okay, all of you clear? Now just check करो कि मुझे कौन से अकाउंट्स एग्जैक्टली बना है। सी रिसिप्ट डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो, दिस विल बी फिक्स्ड। ओके, 1 2 3 4 5 6 ये जो अकाउंट्स रहेंगे, दैट इज़ व्हाट, ये जो कॉलम्स रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, रिसिप्ट साइड में क्या लिखोगे आप? वॉट एवर द कैश वी हैव रिसीव्ड टू स्पेंड ऑन दिस पेटी कैश, दैट थिंग वी हैव टू शो इन द रिसिप्ट साइड। डेट वाइज तो हमें डालना ही पड़ेगा, किसी आज तक के किसी भी फॉर्मेट में हमने डेट मिस किया है क्या? नो, सो डेट भी लिखना पड़ेगा, वाउचर नंबर एंड टोटल। ओके, एंड दिस साइड लेजर फोलियो, इफ लेजर अकाउंट यू आर गोइंग टू ड्रॉ. Is that clear? And the other number of accounts which we have to draw is stationery account, advertisement account, ledger account, conveyance account, postage account. स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज, मतलब क्या? अभी स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट, स्टेशनरी, पोस्टेज, कन्वेयंस, लेजर, एडवर्टाइजमेंट एंड टेलीफोन, ऑल दोज अकाउंट्स यू हैव टू ड्रॉ. ओके, आपका टाइम नहीं जाना चाहिए, मैंने इसलिए ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन दिस नंबर ऑफ अकाउंट्स. ओके, दिस नंबर ऑफ कॉलम्स बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंट्स. तो मैंने कैसे ड्रॉ किया, उसके लिए यू हैव टू यूज़ दिस आइडिया. ओके, अगर पोस्टेज है तो पहला मैंने पोस्टेज भी ड्रॉ किया, टेलीफोन है टेलीफोन भी ड्रॉ किया. ओके, लेजर भी था इसलिए मैंने लेजर फोलियो ड्रॉ किया एंड देन लेजर अकाउंट. इज दैट क्लियर? Okay, so here in this way, by this way you have to draw your petty cash format. Now moving towards next solution. Now here we will start with our solution. See the first transaction on 2011 May. So यहाँ पर मैंने डाल दिया 2011 May on the date column. Your first transaction is, what is your first transaction? See, received from chief cashier ₹200. सो चीफ कैशियर से मैंने 200 रुपया लिया. ओके, ऑन द 1st May. सो यहाँ पर मैं 1 तारीख डालूंगी. 200 रुपये आई हैव रिसीव्ड, सो 200. एंड वन मोर थिंग, इतने सारे कॉलम्स हैं तो अमाउंट्स जहाँ पर लिखोगे, इन दैट कॉलम मेंशन द साइन ऑफ रुपी. ओके, मेंशन द साइन ऑफ रुपी लाइक दिस. ओके, सो मुझे पता चलेगा कि रुपी कॉलम में मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट डालना है. सो ऑन 1st May आई हैव रिसीव्ड 200 रुपीज़. वेन एवर इन द कैश बुक, और नॉर्मली भी हम क्या करते हैं, लेजर में पैसा आया तो 2 लिखते हैं, पैसा गया तो बाय लिखते हैं. सो इन दिस पेटी कैश बुक पैसा आया कि गया? दिस 200 पैसा आया है ऑफकोर्स. सो व्हाट आई विल मेंशन ओवर हियर, टू कैश. व्हाट डज इट मीन? कैश आया 200 रुपीज़. Is that clear? On 1st May. Now moving towards next, paid for postal stamp ₹20 on 3rd May. So 3 तारीख डाल दिया. पेड किया मतलब मैं क्या करूँगी, बाय लिखूँगी, बाय पोस्टल स्टैम्प.
ओके, हाउ मच इट इज़ 20. सो पोस्टल स्टैम्प के लिए मैंने कौन सा कॉलम बनाया था, पोस्टेज. पोस्टेज, यस और नो. सो पोस्टल स्टैम्प के आगे लिख दो 20 रुपीज़. ओके, डोंट मेंशन दिस अमाउंट इन टोटल, ये इसको हमें बाद में यूज़ करना है लास्ट में. ओके, एंड लीव द वाउचर नंबर कॉलम एंड लेजर फोलियो कॉलम एज इट इज़. ओके, एम्प्टी. सो पोस्टल स्टैम्प 20 पोस्टेज के सामने. नेक्स्ट, पेड टेलीफोन चार्जेस ₹8. ये भी हमने पेड किया है, मतलब पैसा गया है. सो बाय टेलीफोन चार्जेस. ओके, यहाँ जगह कम है, मैं इसलिए छोटा लिख रही हूँ. इफ़ यू वांट देन यू कैन यूज़ बोथ द पेजेस फॉर ड्रॉइंग दिस पेटी कैश अकाउंट. ओके, सो टेलीफोन चार्जेस कब पे किए हमने, 5 तारीख को. ऑन 5th में टेलीफोन चार्जेस ₹8. सो हियर इट इज़ टेलीफोन चार्जेस. सो ठीक से सामने लिखना, यहाँ पर लिखोगे नो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको टेलीफोन चार्जेस ₹8. इज दैट क्लियर, टेलीफोन चार्जेस के ठीक सामने. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, पेड परचेस्ड पेंसिल फॉर ₹5. तो बाय क्या लिखोगे आप, पेंसिल्स. ओके, अगर आप यहाँ पर अकाउंट नेम नहीं लिखोगे चलेगा, डिटेल्स डालने. सो डिटेल्स क्या है, रिगार्डिंग पेंसिल. सो 6 तारीख को आपने पेंसिल लिया फॉर ₹500. पेंसिल कवर्ड अंडर स्टेशनरी. सो ठीक पेंसिल के सामने आपको स्टेशनरी में what you have to put amount of pencil ₹5. Next is purchased revenue stamp ₹20. Now revenue stamp again covered under postage. Okay, so on 7th of May buy revenue stamp, buy revenue stamp for ₹20. So here again I am writing what, 20. ओके, पोस्टेज के सामने. नाउ ऑन 9th of May पेड फॉर कन्वेंस ऑफ मैनेजर ₹15. सो 9th में बाय कन्वेयंस, कितने रुपीज़ के कन्वेंस पे किया, कन्वेंस मीन्स कुछ रिफ्रेशमेंट चाय पानी के लिए खर्चा किया, ₹15. सो कन्वेंस के ठीक सामने, कन्वेंस के ठीक नीचे ₹15. ओके, पेड टू नरेंद्र, पर्सन को पे किया है. सो व्हाट डज इट मीन, इट विल कवर्ड अंडर लेजर कॉलम. ओके, सो दिस इज लेजर अकाउंट. ऑन 10th of May बाय नरेंद्र ₹50. तो ये कहाँ पर जाएगा, अंडर लेजर कॉलम, ₹50. ओके, नेक्स्ट इज पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹25 ऑन 14th May. सो बाय एडवर्टाइजमेंट ₹25. सो एडवर्टाइजमेंट कॉलम कहाँ पर है, हियर इट इज. सो इन द कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट जस्ट राइट डाउन ₹25. Okay, and last one is purchased files ₹15 on 15th of May. So buy files, files covered under stationery. So here write down under stationery, files के सामने ₹15. Is that clear? So here we have done with the posting of all the transactions over here. Now what is next? Next क्या बोला है मैंने, don't जस्ट राइट डाउन द टोटल इनिशियली. आपको टोटल कब करना पड़ेगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स. ओके, सो टोटल कैसे करना है, जस्ट होल्ड 1 कॉलम पोस्टेज, फर्स्ट कॉलम पोस्टेज. यहाँ कहाँ पर पोस्टेज दिख रहा है, इतना पोस्टेज ऑफ ₹20. ओके, सो मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ डेट. सो 3rd को कितना टोटल खर्चा हुआ है, 3rd May को टोटल खर्चा हुआ है 20. इज दैट क्लियर? ओके, देन 5th May को टेलीफोन के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, ₹8. सो 8. ऑन 6th May टोटल स्पेंडिंग इज ₹5. सो राइट डाउन 5. ऑन 7th May टोटल स्पेंडिंग ऑफ ₹20. So write down 20. On 9th May total spending on conveyance is 15. So write down 15. Okay. On 10th May total spending
On ledger account is 50. So write down 50. On 14th एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना खर्चा हुआ है 14th को 25 रुपया. सो राइट डाउन 25. एंड ऑन 15th फाइल्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ 15 रुपीज़. सो राइट इट डाउन 15. इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द टोटल ऑफ ऑल द कॉलम्स. ओके, ये टोटल मैंने कैसे किया हॉरिजॉन्टली. ओके, डेट वाइज डेट को पकड़ा, फिर देखा कितना टोटल है, उतना लिख दिया. इज दैट क्लियर? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्लोज दिस अकाउंट. अभी मैं क्लोज कैसे करूँगी? सी, मेरे पास 200 रुपया था. ओके, कैशियर हेड कैशियर दैट इज चीफ कैशियर से आई हैव रिसीव्ड रुपीज़ 200 आउट ऑफ विच दिस टोटल एक्सपेंडिचर आई हैव डन. ओके, सो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है? सी, अभी टोटल मुझे कैसे करना पड़ेगा? वर्टिकली. ओके, सो लेट मी ड्रॉ वन लाइन ओवर हियर लाइक दिस. ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द क्लोजिंग ऑफ दिस अकाउंट. क्लोजिंग करने से पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टोटल मारा, फिर अभी वर्टिकल टोटल्स ऑफ ऑल कॉलम. ओके, नाउ टोटल ऑफ दिस टोटल कॉलम इज हाउ मच? 20 रुपीज़ प्लस 8 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ प्लस 20 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 15. द टोटल इज 158. ओके, नाउ total postage expenses is 40. Okay, total telephone expense is 8. Total stationery expense is 5 plus 15 20. Total conveyance expenses 15. Total advertisement expenses 25 and total ledger expenses is 50. Is that clear? अभी ये टोटल भी करके हो गया. Now what is next step? See, अभी 200 में से 158 रुपीज़ वी स्पेंड. ओके, अभी मेरे पास फिर अभी कैश में दैट इज़ व्हाट पेटी कैश अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सेम मेक द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट एज लाइक लेजर. जैसे हम लेजर में क्लोज करते थे वैसे ही अभी क्लोज करना है. सो हेवी अमाउंट क्या लिख दो, नीचे लिख दो 200 ऑन बोथ द साइड. सो हियर ऑल्सो 200. Out of 200 we spent total amount of 158 on all these things, all these expenses. Okay, so these transactions spent total 158 rupees. So मेरे पास बचा कितना अभी पैसा? 200 minus 158 total is 42. So this 42 is nothing but my closing balance. So closing balance को मैं क्या लिखती हूँ? By balance carried down. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बिकॉज ये बचा हुआ पैसा है तो मैं बाय करके लिखती हूँ. ओके, ऑन क्रेडिट साइड. ओके, सो ऑन 16th ऑफ में मैंने ये अकाउंट क्लोज किया और क्लोज करने के बाद मुझे पता चला मेरे पास 200 रुपये थे. ऑन फर्स्ट में आई वॉज हैविंग 200 रुपीज़. आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दीज एक्सपेंसेस आई एम लेफ्ट विथ रुपीज़ 42 ओनली. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू carry forward this 42 rupees for the next petty cash expenses. Okay, so next petty cash expenses के लिए मैं कहाँ पर forward करूँगी? 42 rupees here only and the date would be on 17th या फिर 16th लिखा तो भी चलेगा. Okay, to balance brought down. और ये मुझे कहाँ पर लिखना पड़ेगा? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हियर 42 रुपीज़. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, मैंने क्या किया? सिंपली आई मेक द टोटल ऑफ दिस डेट वाइज दैट इज हॉरिजॉन्टली एंड देन कॉलम वाइज दैट इज वर्टिकली. ओके, देन व्हाट आई डिड इज आई जस्ट सिंपली क्लोज दिस अकाउंट बाय हैविंग द टोटल ऑफ हेवी साइड. ओके, अंडर दिस 2 कॉलम टोटल कॉलम एंड रिसिप्ट कॉलम 200 में से 158 खर्चा हुआ. आई लेफ्ट विथ 42 रुपीज़. दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ओपन इट इन द नेक्स्ट डेट.
ओके इन द अपकमिंग डे। तो ओपनिंग मैंने क्यों यहाँ पर लिखा, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग भी कहाँ से किया, रिसिप्ट में से किया। मेरे पास इतना पैसा पड़ा था, अभी मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, कितना 42 रुपीज़। सो दिस इज़ व्हाट पेटी कैश अकाउंट। ऑल ऑफ यू क्लियर? सो दिस पेटी कैश बुक इज in front of you. All of you solve it, okay, and try to solve it by yourself also, okay. ऊपर लिख देना petty cash book, okay. All of you clear? Now here we are done for the day. You can take the screenshot of the same and solve it in your notebook. Is that clear? Thank you for the day.